मैनेजमेंट से बात करते हैं। टाटा ग्रुप के शेयरों में आज अच्छी रौनक है। दरअसल टाटा ग्रुप की सब्सिडरी ने गुजरात में ईवी बैटरी पर प्लांट लगाने के लिए करार किया है। इस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए टाटा समूह 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस नई डील और आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ आर मुकुंदन साहब जुड़ गए हमारे साथ। गुड आफ्टरनून सर, बहुत समय बाद आप मीडिया पर आए हैं और एक अच्छी न्यूज़ के साथ। जरा आप एक शेयर करिए इस पूरी के पूरी इन्वेस्टमेंट्स में टाटा केमिकल्स का क्या रोल रहेगा और टाटा केमिकल्स के लिए आगे क्या आउटलुक रहेगा। So thank you very much. I think my fundamental point on this इसमें एक कहना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा ग्रुप की कंपनी अग्रतास स्टोरेज सॉल्यूशंस सस्टेनेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस उन्होंने किया है MOU साइन गुजरात गवर्नमेंट के साथ। तो ये दिस इज गोइंग टू राइड ऑन द EV एंड EV डिमांड। As far as Tata Chemicals is concerned, हमारा जो है कि I always maintain that our products are growing on the back of sustainability. So bulk of the demand growth is coming from solar glass as well as coming from lithium carbonate, which is one of the key ingredients which goes into the batteries, the EV batteries especially. So that demand will continue, and the bulk of the buyers of this lithium carbonate, as far as the material which goes into that, are in South America and in Australia. This is an imported material into India. So certainly as EV revolution moves, including in India, I think the demand for this product will increase, and that will also play into demand for soda ash. फिर मिस्टर मुकुंदन, there would be some exposure जो टाटा केमिकल्स होल्ड करेगा इस पर्टिकुलर वेंचर में, some way or the other? No, not at all. I think we want to clarify that it's an MOU which is signed by an independent company. Anything else, if it is beyond that, I think we will communicate. As of now, it is a separate entity which has signed an MOU. I wanted to clarify that. Okay. चलिए, अभी इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा सर, मैं एग्जैक्टली टाटा केमिकल्स के संदर्भ में जो बात करना चाह रहा था, आपने FY23 में काफ़ी अच्छा खासा विस्तार किया, 2100 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ ऑलमोस्ट स्पेंड हुए। FY24 के लिए आउटलुक, और साथ ही साथ सर मल्टीपल इंस्टेंसेस में सोडा ऐश के प्राइसेस जो हैं वो घटाए गए हैं, प्राइस कट्स हुए हैं। इस वक्त डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है, और इसको देखते हुए सोडा ऐश की जो कैपेसिटी एडिशन है उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर उसमें कोई बदलाव की योजना? So firstly, I think if you take a long-term growth and or a medium-term growth, which is about let's say 18 months to 24 months, that growth and then moving into 5 years growth, that momentum is about 4 to 5% annualized growth on a 55 million ton market. So it is almost adding close to 2 million ton, 2.5 million ton a year on year, I think, as the demand grows. So in terms of supply, I think except for about 1.5 million supply which is coming in China, we don't see much of supplies coming in. Other supplies are all mostly debottlenecking supplies. For example, we are bringing in 200,000 ton this year. Next year, approximately another 100,000 ton will come. Then after that, we will be adding close to about 700,000 ton between our operations in India as well as in US. So I think it is a phased increase which everybody is bringing in. So demand supply will be more or less balanced, as I've maintained all along. In the short term, I think there's a bit of a price change which has happened, mainly in the Asian market. It is not anywhere else in the world, mainly in the Asian market, on the back of two drivers. One is input costs have reduced, especially logistic costs जो है कम हुई है, shipping rates have come down, the energy costs have come down, coal has come down. So I think some of the benefit has moved out, as well as the China reopening has been slightly muted. So I think one of the issues which we have faced in the short term is the increase in inventory in China, which has led to a bit of softness in the Asian market. Otherwise, the medium term and long term story is intact. And leaving aside the geography of Asia, I think most of the markets are doing well. Within Asia, again, let me highlight that India is a bright spot.
India continues to be the growth momentum as far as the Asian economies are concerned, and will continue to lead the world economy. So bulk of our investments are actually focused on India as well as also in US, because US continues to be a competitive place for us to invest. There will be minor investments in other places, but most of the investment is going to be concentrated in these two geographies. जस्ट इन द नियर टर्म फिर क्या आपके मार्जिन्स पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा चाइना फैक्टर और वो जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं उसकी वजह से क्या नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहने की थोड़ी सी चांसेस हैं? Actually, for us, we have 800,000 ton approximately, let's say, round it off to a million ton, 25% capacity exposure in Asia. Rest of it is in around the world. In fact, I've said that even at the beginning of last quarter, that the US margins will expand. There will be Indian margins will remain more or less in a very range-bound manner, and the UK and Kenyan margins will normalize. So overall, I would expect the margins to remain in a very, very narrow band, and we should be seeing healthy move going forward. And mainly the positive move will come out of US. ये जो यूएस और यूके के मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग या फिर जो बाउंस बैक देखने को मिला, इज इट गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मिस्टर मुकुंदन? जब आप अपने क्लाइंट से वहां पर बात करते हैं या फिर एक ग्राउंड चेक लेते हैं, इज दैट पुल बैक और द रिकवरी लार्जली सस्टेनेबल और लाइकली टू ग्रो? See, European markets are more or less held well, and they had the benefit of energy hedges last year. That benefit may not be there for us this year, but the demand is more or less steady and going exactly as we planned. The expansion in margin will actually happen in US, where we are seeing the margin expansion continue to move forward, and the demand also is fairly robust as we had expected. So really, we don't see any shift in those markets. Overall, I think there could be very geographical pockets and periods and wherein you would find a bit of softness, but I think this is not a general trend. So overall, I would say that leaving Asian market out, and India is an outlier in this, I think rest of the world is probably in a good spot. We had anticipated there could be issues in Europe, but Europe has coped with the problems or stresses very well, much beyond our expectations. मिस्टर मुकुंदन, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी. जब टाटा मोटर्स ये पूरा ईवी रोड मैप सामने रख रहा था, उन्होंने कहा था कि ग्रुप कंपनियों के साथ खूब मिलकर काम करेंगे, और उसमें टाटा केमिकल्स का भी नाम आया था. एंड आई रिमेंबर दैट बिग प्रेजेंटेशन अमंगस्ट ऑल टाटा ग्रुप सीईओज वेयर यू आल्सो प्रेजेंट. क्या आप हमें कुछ गाइड कर पाएंगे कि किस तरह का रोड आपका योगदान रहने वाला है उस पूरे टाटा समूह के ईवी ड्रीम्स में, या फिर ओवरऑल जो इस समय भारत में ईवी को लेकर कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी अवेलेबिलिटी की जो बात हो रही है, व्हाट रोल विल टाटा केमिकल्स प्ले? So we're already playing a large role in terms of our exposure to battery chemicals is fairly good. In fact, a lot of our growth is coming from there. All I wanted to say was that the growth of battery chemicals, when we speak about it, the battery chemicals are mostly bought or produced in South America and Australia, where we are selling our product, and through them it goes to everybody in the world. So as Indian EV market matures, India will also start to buy these chemicals a lot more, so it will benefit all those who play in that ecosystem. So certainly there'll be a benefit, and it's going to be an indirect benefit, and that's how it is going to pan out. And we continue our efforts in terms of R&D efforts, in terms of development efforts, to support through new chemicals, new formulations, this entire business, and that effort is ongoing. All right, Mr. Mukundan, thank you so much समय निकालने के लिए हमारे लिए आज और हमसे बात करने के लिए. ये बात हो गई टाटा केमिकल्स की. शरद अवस्थी भी हमारे साथ हैं. शरद जी, गुड आफ्टरनून. आपकी कवरेज है क्या टाटा केमिकल्स को लेकर, कोई व्यू स्टॉक पर? जी, जनरली हमारा ये मानना है कि अगले 1-2 साल स्टैटिक से रहने चाहिए, क्योंकि कॉस्टिक सोडा में जैसा कि मैनेजमेंट भी बोल रही थी, लगातार प्राइसेस वगैरह नीचे आ रहे हैं. हालांकि इनपुट कॉस्ट भी नीचे आ रहे हैं, बट जो टॉप लाइन रिलेटेड थोड़ा फैंसी भाव वगैरह मिल रहे थे, अब वो नहीं मिल रहे. बट नंबर्स के हिसाब से थोड़ा स्टैटिक नंबर्स रहने चाहिए. बट जैसे जैसे नंबर स्टडी होते हैं, हमारे हिसाब से अगले 2-1 साल में आप 85 रुपए के आसपास की अर्निंग्स पे स्टेबलाइज हो जाना चाहिए. तो
13-15 का मल्टीपल तो मिल सकता है कंपनी को, तो हमें लगता है 1200 रुपए तक के लक्ष्य। और ईवी वाला अगर कोई ट्रिगर और डिटेल में निकल के आता है, हालांकि वो थोड़ा ग्रेजुअल और स्लो मूविंग होना चाहिए इनिशियल लेवल पे, वो काफी छोटा हिस्सा है टोटल टर्नओवर का, ग्रेजुअली वहां पे जैसे पिकअप आता है वो एक रीरेटिंग का की वजह हो सकती है। बट अभी आप कंजर्वेटिवली भी चलें तो मुझे लगता है 1200 1250 तक का लक्ष्य पॉसिबल है। 1200 1250 के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं। आज टाटा केमिकल्स 2.5% ऊपर है। अच्छा शरद, आपसे हमने ये नहीं पूछा कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या टाटा केमिकल्स ही होगा या फिर कोई और स्टॉक?